So we were discussing day 1 paper. So we already done with the polity, that is up till question 36. Let's move to 37th question onward. So from 37 to 52 we have science questions mentioned before 37 actually, so that you can differentiate how much you have scored in science as well as polity to check out your preparation. So let's start with that. Question number 37. So cell discovered by Robert Hooke. So this is one additional information you should remember. Your serious exam has asked this, right? So in this you have to ask, they have asked you which of the following is incorrect about the cell. First, cell membrane is openly permeable. This is completely wrong. Semi-permeable, right? The first is wrong. Nucleus of the cell contains chromosomes and plays central role in cellular reproduction. Absolutely correct. Chromosome reproduction में होता है, आपको पता है. Third, RER, rough endoplasmic reticulum and soft. तो दो तरह के रेटिकुलम है. सीरीज 2 2018 क्वेश्चन उसमें ये पूछा था एक्चुअली. सो यहाँ पे ये गलत है, वो आपको ना उल्टा करके लिखा गया है. सो थर्ड इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सो करेक्ट जो आंसर है दैट इज इनकरेक्ट. सो फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट. सो फर्स्ट 37th इज डी. 38th, different organelles are seen in cells to do various function. मतलब सेल के अलग अलग बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जिनके बहुत सारे फंक्शन हैं. ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग एंड पिक आउट द करेक्ट. ओके. Photosynthetic bacteria has plastics filled with chlorophyll in them. तो photosynthetic bacteria में plastics chlorophyll वाला नहीं होता, right? Bacterial cell is characterized by the absence of distinguished nucleus. Yes. बैक्टीरियल सेल में आपके न्यूक्लियस जो है सो सेपरेटली नहीं होते. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. करेक्ट ही ढूंढना है ना. तो सेकंड इज करेक्ट. राइबोसोम्स एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल. ये भी इनकरेक्ट है. तो 38 इज बी. 39 ये केमिस्ट्री का है, टेकन फ्रॉम आई थिंक एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2. द मेल्टिंग पॉइंट इज ए स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स. ठीक है, बात सही है. ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा if intermolecular force of attraction is more, that means more energy is required to melt it. That means melting point will be high. Consider the following. The temperature at which solid becomes liquid at atmospheric pressure. Now this word is important. At atmospheric pressure is called melting point, because if you change the pressure, melting point will shift. So first is correct. Generally melting point of substance decreases with increasing pressure. ये उल्टा लिखा हुआ है. Melting point of substance increases with increasing pressure. Decrease in pressure. So second is wrong. Melting point is the maximum temperature the substance can attain, above which temperature remains the same even with the supply of heat. So that means they are talking about latent heat, right? Supply of heat दे रहे हो but temperature constant है. So melting point पे temperature constant रहता है. Yes. If you remember 0 degree centigrade ice melting to 0 degree centigrade water. So यहाँ पे रोल किसका होता है? Latent heat का. So this line has been taken from NCERT chapter 2. NCERT आपको straight forward मिल जाएगा वो. तो 39 आंसर इस क्या था? ऑप्शन बी. 40 evaporation. So evaporation is a surface phenomena. आपसे गलत पूछा गया. तो पहला वाला तो सही है. Molecules at the surface evaporate. Molecules at the below the surface don't evaporate. जो भी molecules surface पे है, they have extra energy, they get heated, that's why they evaporate. Evaporation increases with humidity. No, evaporation decreases with humidity. Why? If there is more humidity, amount of water vapor in the atmosphere is already more. That means evaporation will be less. So second is wrong. तो आंसर 40 का B. थर्ड आप कर लोगे. टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होएगा. 41. The pressure and temperature defines the state of substance. ठीक है. Which of the following is correct one? So first and second are correct, right? First and second. Second statement is LPG. Case of LPG, more pressure and less temperature, right? LPG में आप high temperature दोगे तो आग भी लग जाएगी ना. So first and second. 41 is A. लिखा हुआ सेम चीज है. अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर. जो एलपीजी या सीएनजी है
वो तो ज्यादा प्रेशर पे आपने कंप्रेस करके रखा है, इट हैज बीन कंप्रेस्ड टू लिक्विफाई, राइट। जो आपके पास सिलेंडर आते हैं दैट हैज बीन लिक्विफाइड, जिसमें ज्यादातर क्या है, ब्यूटेन, आपके पास ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी में, राइट। उसमें नेचुरल गैस होता है, सीएनजी में मीथेन। वी डिस्कस दिस व्हाइल वी डिस्कस एनर्जी टॉपिक इन ज्योग्राफी, राइट। एंड स्मेल के लिए क्या होता है, इथाइल मर्सेप्टेन, राइट, ठीक है। 42 सॉल्यूशंस के बारे में पूछे गए, इसमें आपके पास गलत है कि एलॉयज आर आल्सो सॉल्यूशन, नो, एलॉयज आर मिक्सचर्स। सो 42 में थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज एलॉयज आर मिक्सचर्स नॉट सॉल्यूशंस, राइट। So 42 is C. 43 compared to suspension colloids, देखो दोनों में, सस्पेंशन में colloids में particles are hanging within the what we say solvent. So consider colloid is a heterogeneous mixture, yes, they settle down when left undisturbed. Suspension settle down, colloids do not. Remember milk is a colloid, तो अगर आप उसको ऐसे छोड़ दोगे तो उसका फैट नीचे बैठेगा क्या, नहीं, राइट। बट इफ यू हैव सैंड और डस्ट पार्टिकल्स हैंगिंग इन वाटर सस्पेंशन, इट विल सेटल डाउन। तो सस्पेंशन और कोलाइड में यही फर्क है, इन कोलाइड्स द पार्टिकल्स और यू कैन से द सॉल्यूट डज नॉट सेटल डाउन इफ लेफ्ट फ्री। जब भी कोलाइड हो तो आप दिमाग में मिल्क को रखा करो एग्जांपल, राइट, और उससे रिलेट करो। तो सेकंड आपका गलत है, कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ब्रैकेट में लिख लेना टिंडल इफेक्ट। So first and third are correct. 43rd is A. 43rd is A. 44th. Fractional distillation is a special type of distillation which we use in separation of petroleum products. Yes. Consider the following. Distillation is used for separation of. आपसे incorrect पूछा गया. Which of the following is incorrect? बट इसमें मैंने ना जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है बोथ आर करेक्ट, दैट इज जस्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, आई वांटेड टू कन्वे दैट दिस इज इंपॉर्टेंट। रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रिंसिपल इज different constituent of a solution or a mixture has different boiling points, like in the case of petroleum, right, petrol has different boiling point, diesel का अलग होगा, Vaseline, petroleum jelly, paraffin wax सबका अलग अलग होता है, fractional distillation। 44 का इनकरेक्ट तो सारे सही हैं, 44 का डी। 45 सेल्स आर द फंक्शनल, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग। तो आपसे पूछा गया चूज द करेक्ट वंस, तो 45th का आंसर है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बी। एक सेकेंड लेट मी चेक। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिक्विड ग्लास इज टू मॉडिफाई the substances formed in cell, ठीक है। तो इसमें तीनों गलत है आपके पास, तो 45 आंसर इज डी। ये बायो का है, आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल इन बायो एक्चुअली। 46 मिक्सचर्स कैन बी होमोजेनस और हेटेरोजेनस, ये तो सेम ही क्वेश्चन लग रहा है। सस्पेंशन इज हेटेरोजेनस, यस, कोलाइड इज आल्सो हेटेरोजेनस, अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था। The particle of suspension scatter a beam, yes, Tyndall effect. Last वाला statement भी सही है आपके पास। So this all 3 points have been taken from NCERT chapter 2 class 9 science. Straightforward point 46 is D. तो अगर आपने पढ़ा होगा तो you can find this point ditto in the book. 47 Tyndall effect. First is correct, NCERT point, canopy of light वहीं से लिया मैंने। Colloids do not settle down when disturbed, अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, colloid do not settle, second is also correct। Third, colloids cannot be separated by filtration, yes, आप दूध से कैसे निकालते हो वो फैट्स, by churning out, centrifugation, simple filtration से तो नहीं होता, so that means ये भी correct, all of them are correct। 47 is D। 48 they are asking incorrect one, so in 48 as well completely NCERT points, all of these are correct, so that means incorrect वाला option तो वही है ही नहीं, so 48 is D। 49 this point has been written in the NCERT chapter 2 in box, 2 elements, liquid at room temperature, mercury and bromine, सही है। gallium and cesium
Absolutely correct. Cesium is a metal, gallium is a semiconductor. Crystallization is a process, ये भी सही है. 49th is D. देखो, this all has been ditto taken from the NCERT chapter 2 class 9th book. आप देखोगे तो आपको line by line मिलेगा, right? Question number 15. Hypo means less, hyper means more, iso मतलब equal. Equal concentration isotonic. Hyper तो कहते हैं ना बंदा hyper हो गया. Hyper मतलब more concentration. Hypo मतलब less concentration, right? तो मैंने options थोड़े जंबल कर दिए थे. तो देखो exactly the same. तो जो थर्ड का जो definition है आपका, hypertonic का जो definition में लिखा हुआ है, if the medium is exactly same, तो ये isotonic में होना चाहिए था, right? So all these three options have been jumbled. So तीनों incorrect लिखे हुए हैं यहाँ पे. So 15 का D. मैंने आपको hint दे दिया. You can match. Hypo is less concentration, hyper is more. HYPER मतलब more. Iso is equal. Question number 51. Osmosis and diffusion. So I have just changed the option of osmosis and diffusion. Whatever is mentioned in point 1 is the definition of diffusion. Diffusion is due to concentration difference by default. और जो second में definition लिखा है वो osmosis का है, right? तो I have changed the explanation of osmosis and diffusion. तो osmosis में जो osmosis means passage of water from region of higher concentration through a permeable membrane, right? Did you get my point? I have changed the definitions here. Whatever is written in point 1 is actually for diffusion, and whatever is written in point 2 is actually for osmosis. तो third statement सही है. Underline the word endocytosis. Cytosis मतलब cell related, right? And endo मतलब inside. So third is correct statement. आप endocytosis को underline कर ले. Remember this word. हाँ? If the first point for interchange, osmosis is from lower concentration to higher concentration. No. Osmosis के लिए आपको membrane की जरूरत होती है. Right? Lower concentration to higher. नहीं, ऐसा नहीं है. तो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो? फ्लूइड का, सॉल्ट का कि सॉल्वेंट का? ये भी तो चीज है ना, राइट? तुम ना देखो, अगर मान लो कि देयर इज लेट्स सपोज सॉल्ट इन वाटर, A and B are, A is solute, B is solvent. Why B is solvent? Because concentration of B was more, right? So there are two statements. Higher concentration to lower for what? Solute wise या solvent wise? दो statement है इसमें. Solute. क्वेश्चन नंबर 51 का क्या था? गलत है ये. Again 51 is also the point I have taken from NCERT, chapter 5 cell biology. There is no change in the ditto point मैंने लिया है, but definition change कर दिया. 52 इसमें आपके पास incorrect, all statement are correct. So 52 all correct, so incorrect is none. The answer is D. So this was for the science. As the syllabus of science was less because relatively science का part कम होता है, तो I think even if you are comfortable with this, I try to give you more and more information. This is how you have to read NCERT. These are the quality points. If any, even if UPSC tries to pick out the point from NCERT, they will pick such points to confuse. कि osmosis क्या है? आपने नाम सुना होगा but definition में confuse हो गए, right? So this is about science और ये आपका quality वाला part है. So I would ask, इसको थोड़ा zoom कर दो. Right, this is the final answer key for the quality and the science part for the day 1, that is August 6, 2019. I hope you enjoyed the question, and by the word enjoy I means the question which we put actually tried to share some info. This should be the base, and this is how you have to pick up the points. आपकी mentality अगर ऐसे है, questions के points को अगर आप ऐसे attack करते हो, you will definitely get success in UPSC serious exam, right? Anyhow, if you have any doubt or आपको लगता है कि नहीं थोड़ा explanation चाहिए, you can definitely write us at defencecareeranalyst@gmail.com or WhatsApp at 7710548960, right? But try to write some reference. जैसे we have given you कि NCERT chapter 2 का था, लक्ष्मीकांत chapter 7 का था. You just try to find out first. अगर उसके बाद confusion है तो आप लिखना, right? And do write us how was the test.
Do you feel that it added value to your preparation? Right? So if it is, we'll be happy, but do write us for sure. So thank you. We'll discuss the maths question paper separately. So let's calculate your score. If your score out of this 52, multiply the correct one by 1 and the incorrect by minus 0.3. If your score is more than 25, that means you are good, right? If you are too good, you will definitely get, crack the series. So thank you.